हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज के हमारे सेगमेंट में है सीए यशस्वी गोयल। सो अबाउट यशस्वी, ही इज प्रेजेंटली वर्किंग विद ईवाई इन फॉरेंसिक्स। इससे पहले उनका जो मेजर एक्सपीरियंस है वो इंटरनल ऑडिट में भी रहा है। तो आज के सेगमेंट में यशस्वी आपको देने वाले हैं इंसाइट अबाउट बिग फोर्स फॉरेंसिक्स एंड इंटरनल ऑडिट। सो हाय यशस्वी, हाउ आर यू? हाय गुंजन, आई एम गुड। आप कैसे हो? या आई एम ऑल्सो गुड। या ओके। सो बहुत थैंक यू अच्छा फॉर लगा इनवाइटिंग मी टू आप दिस चैनल डिस्कशन। पे आए। या all right. Actually, it's my pleasure to have you on my channel. And थैंक yeah, all right. So, shall we start? यू। या श्योर। ओके यशस्वी, तो सबसे पहले तो आप जैसा ईवाई इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो बिग फोर्स के लिए एक हाइप होता है बच्चों के मन में कि अटेम्प्ट्स अगर ज्यादा लग जाते हैं तो शायद हमारा नहीं होगा। तो उस बारे में आपका क्या कहना है दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग विथ बिग फोर्स सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। सो कितना जो है आपके एज अ सीए फ्रेशर के लिए जो है अटेम्प्ट मैटर करते हैं? या बिग फोर इज अ ड्रीम फॉर एवरी सी एस्पिरेंट। जब से सीए में ज्वाइन करते हैं सब लोगों का एक टारगेट होता है दैट आई शुड एंटर बिग फोर एंड ऑल। मैंने ये ड्रीम 2 बार अचीव करा है, फर्स्टली इनटू इंटर्नल ऑडिट एंड देन फॉरेंसिक्स एंड सेम ऑर्गेनाइजेशन ईवाई। एंड now moving towards the attempt part. To be true, attempt is not a big constraint. Like if a person has that eagerness to learn and grow, then attempts इतना मैटर नहीं करते। मेरे अटेम्प्ट 3 लगे थे फाइनल में, बट ओवरऑल मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। मैंने अपना 100% दिया है वर्क को, एंड आई एम ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड गिव अ वैल्यू एड ऑन टू एवरीथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। सो आई फील कि अगर वही माइंडसेट रहेगा देन अपॉर्चुनिटीज पे कोई बॉटलनेक नहीं होता, सबको सब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। डोंट गेट दैट माइंडसेट की बिग फोर में बहुत ज्यादा हाइप है एंड एंटरिंग इज रियली टफ। सो बस हम्म। एक ईगरनेस टू लर्न एंड ग्रो, बस वो होनी चाहिए। मतलब जब आपके अगर इंटरव्यूज के कॉल्स वगैरह आते हैं तो आपको वो चीज शो करनी है कि हाँ, वी आर ईगर टू लर्न एंड हम लोग हो जाएंगे इस कल्चर में फिट। या राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इट डिपेंड्स कि आप मतलब अपना मैसेज कितना कन्वे कर पाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी, आप अपना मैसेज इफेक्टिवली दे सकते हैं। दैट आई जस्ट नीड एन अपॉर्चुनिटी, मैंने अभी तक क्या काम करा है। मतलब हम्म। अप टिल आर्टिकलशिप वर्क इज सेकेंडरी एंड एजुकेशन इज द मेन प्रायोरिटी। हमें स्टडीज पे मेन फोकस करना है, बट आफ्टर जस्ट attaining the CA prefix before the name, work becomes the main priority. Then 100% देंगे, and वो the person who is taking the interview उसको आइडिया पड़ जाता है कि उस बंदे का स्किल सेट या उसका माइंडसेट क्या है, देन या राइट। अपॉर्चुनिटीज विल बी ओके ओके। या सो यशस्वी, एज यू आर वर्किंग इन फॉरेंसिक्स, सो बेसिकली ये जो फील्ड है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि क्या हुआ करता है इसमें, और ये ट्रेडिशनल फील्ड से बहुत अलग होती है। लाइक हम जो है ऑलमोस्ट ऑडिट वगैरह नॉर्मली स्टेट ऑडिट करे हुए होते हैं, इंटरनल करे हुए होते हैं, बट फॉरेंसिक्स इज समथिंग जो कि नहीं होता है। तो इसमें जो है क्या रहता है बेसिकली, एंड आपका अब तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है इस फील्ड में? Yeah, forensic is somewhat new profile and a niche profile. Like इसमें इतना quantum ज्यादा नहीं है. Like if you see the job openings and all, so statutory audit, internal audit, taxation की large quantum of openings is there. But forensics की openings थोड़ा low होती है because इसका main reason ये है, like the statutory audit work and normal taxation and these are traditional work field. Finance, these राइट। are traditional. So इन सब में quantum of work भी ज्यादा है and obviously फिर बंदे ज्यादा required हैं. But forensic is something new and it is somewhat कि वो traditional field से हटके है. It is not a scope bound or a routine activity. It is something different. It is related to the investigations and basically fraud investigation part. So it is not a regular exercise. जब companies को requirement होती है, they engage the consultant and we work on the same. So ओके। इसमें मतलब entering the same is not that much difficult and बस वही कि basic skills, because being a chartered, we work into forensic as a expert for finance domain only, considering all the facts and figures of the particular assignment that we are working on. So बस वही कि आपको एक investigative mindset चाहिए to enter into forensics and that's all. ओके ओके। सो आपका सो फार अभी तक इस फील्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Experience is really good. Like previously, I was into internal audit, and moving from internal to forensic was exactly a new thing for me. Like forensic requires a lot of tools and techniques, and new mindset is required. And luckily, got the good teams and good assignments and all, and I got the opportunity to learn on many new things. Like
from the tools and techniques of the field, and also how the investigations actually work on. So it's indeed really great. ओके ओके लाइक आपको जो है फॉरेंसिक्स में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? मतलब अच्छी फील्ड है, Right. बिकॉज नई फील्ड है, Like it स्पेशलाइज is की something it is something new and different from the है। traditional work field. Like we just regularly see, like the statutory and the internal audit is a scope bound activity, and forensic is not a scope bound activity because the assignment is over there. We need to think beyond all the scopes, beyond all the things which are before us. It requires a captive mindset. What ओके। Because it's a forensic assignment. What is being portrayed to us might be not the actual scene, so it requires something different. And if this is the work, then obviously a person who wishes to just explore new opportunities and do something out of the box, then obviously this is the field that one should go for. ऑल राइट ऑल राइट। सो यशस्वी, एज यू टोल्ड दैट आप इससे पहले जो थे इंटरनल में थे एंड देन वहां से आपने फॉरेंसिक्स में स्विच किया। सो हाउ यू टुक दैट डिसीजन टू स्विच, एंड आपको कैसे लगा कि नहीं अब मुझे इंटरनल से, बिकॉज उसके बाद भी बहुत सारी जो है अलग अलग फील्ड्स होती हैं, जैसे हो गया आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, तो इवन बहुत सारी फील्ड्स हुआ करती है, फाइनेंस। तो आपको कैसे लगा कि अब मुझे फॉरेंसिक में जो है वहां जाना चाहिए? So basically, internal audit is risk advisory. We address the risk of the client. And in my personal opinion, I feel that forensic is the next step for it. Because in forensic also, we are eliminating the risk of the client. I feel that spending articleship time and post articleship also sometime into internal audit, I got to work on various industries and various process audits I had worked on. And I thought that it's the time to move on something new and explore something new that which offers me new learning exposures and a new mindset, and on which I can just build on as a complete risk professional. So I thought to move to forensics now, and I got the opportunity luckily. ओके ओके। सो यशस्वी, लाइक बिग फोर्स में फॉरेंसिक की कितनी अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलती है, प्लस अगर आप यहाँ से बाद में इंडस्ट्री वगैरह में जाना चाहें तो उधर वहां पे फॉरेंसिक्स अगर आप अभी लेते हैं तो कितनी आपको जो है आगे एक्सपोजर देखने को मिल सकता है? So, like, it's a niche profile. So, obviously, the quantum of openings in comparison to a traditional workfields like stat audit, internal audit is very low. But who enters into forensics and the growth path is really good. Like, growth is individual driven. And if the person has that eagerness to learn and grow, then sky is the limit. So I feel that like if you enter into forensics and you start the career or working on various assignments and you develop that mindset that how the things are actually working, then obviously in like 10 to 12 years you can achieve the highest posts of the organization. And moving towards the industry part, like many industries also have a inbound forensics department, like basically the audit team and all, which use forensic tools, and forensic people are also over there. Forensic proper forensic labs are there in various IT companies, ओके। and which have a global presence too, and working in India and as well. So industry also needs people who have that mindset. So obviously, like a person having that skill set, opportunities will be there. ऑल राइट ऑल राइट। सो यशस्वी, जैसे कि बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि मिड साइज फर्म से अगर आर्टिकलशिप हुई होती है उन्हें फॉरेंसिक का वर्क कभी मिलता ही नहीं है। तो अब ऐसे लोग जिनके पास पहले से कोई नॉलेज नहीं है फॉरेंसिक की एंड उन्हें अब फॉरेंसिक में जाना हो आफ्टर डूइंग सीए, सो कैसे वो है जो अप्रोच कर सकते हैं फॉरेंसिक के लिए? लाइक उनके लिए बेसिकली स्किल्स क्या होनी चाहिए अगर अब वो फॉरेंसिक में जाना चाहते हैं तो? एंड आपका भी क्या था, मतलब आपका कुछ रहा फॉरेंसिक्स में पहले से एक्सपीरियंस वगैरह? No, मेरा एक्सपीरियंस हार्डकोर इंटरनल ऑडिट का ही था, फ्रॉम माय आर्टिकलशिप टू पोस्ट आर्टिकलशिप वर्क पार्ट. But like you mentioned, like how a person, a CA fresher can enter into forensic. So being a chartered and being a part of the forensics team, we require a good grip over the basic accounting, auditing, and taxation concept, because it's ओके। from the finance background only that is widely covered into the CA curriculum. So obviously, the mid-sized firms and the people not having a very vast articleship experience might not be having such experience to work on big assignments. So it's not a hindrance. Like people coming from decent background and not like the mid-sized firms can also enter into forensics, but they should have a good grip and that eagerness to learn and grow. Because from a fresher, the Big Four only expects that a person is available and is
has a skill set to learn and grow, nothing more. And a Okay. good grip over the basic concepts like the that I already mentioned, accounting, taxation, and finance part only. ओके सो लाइक अगर किसी का अकाउंटिंग पार्ट ऑडिटिंग एंड फाइनेंस वो सब स्ट्रांग है तो मैटर नहीं करता इतना कि आपका पहले से काम किया हुआ है आर्टिकलशिप में या नहीं आपका हो सकता है राइट Exactly, like a good grip over all the concepts that is expected from a chartered. And if you have that academic part, then obviously you will get the opportunities. And I would like to add on, like Fonsic covers both type of assignments, like a proactive also and a reactive also. ओके So all that things just accumulate and people get the opportunities. But the only grip thing is the good grip over the CA curriculum part that is being taught to us, and all the things that are expected from a chartered. And lastly, the investigative mindset, nothing more. ओके ओके सो यशस्वी आपने इससे पहले लाइक फॉरेंसिक्स के से पहले आपने और भी दूसरी फील्ड्स में ट्राई किया था रिजल्ट आने के बाद No, I only looked into forensics and I got the opportunity. ओके ओके सो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है बिकॉज क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है यहाँ पे जो है वो डिमांड सप्लाई वाला गेम जो रहता है कि जो लोगों की सप्लाई है थोड़ी कम रहती है डेट्स वाई जो है आपका पैकेज काफी हायर साइड पे रहता है तो बहुत सारे लोग सिर्फ पैकेज ल्यूक्रेटिव पैकेज की वजह से इस प्रोफाइल में जाना चाहते हैं सो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं और आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे I honestly feel like at the start of the career, package should be the second criteria. First should be you should relate to the job profile and the growth aspect. If you feel that you can relate to this work and you will enjoy working over there, then you should just choose a profile. And obviously, monetary part is also something really important yeah than the package. And if a person feels like this is something new and I will learn more and I can be a value addition to the company also and to my client also, then obviously you should go for it. And like you mentioned, that demand supply game and all. So these things happen, but not to that great extent. Like a person will get all the opportunities and good things if they are good at the work. I will just ओके conclude on that. ओके या लाइक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए राइट Exactly, exactly. Like a good figure, if you don't relate to that particular work profile and you are just seeing the package thing and हाँ you are not enjoying the work, then obviously there are chances that it will not land up to a long extent. Yeah, right. Completely agree with you. Right. All right. सो यशस्वी जैसा कि आपने पहले बताया कि आपका इससे पहले जो था मेजर एक्सपोजर था जो था वो इंटरनल ऑडिट में रहा है सो उस एरिया में क्या आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस था आपने वहां पे क्या क्या जो थी चीजें वो करी एंड उसमें और इसमें डिफरेंस बेसिकली आपको क्या लगा So internal audit is really nice profile. Like we address the risk of the client. It's risk advisory. We हम्म get to know the process knowledge of each and every business aspect, like the things like how the things actually work on the field. We got yeah to know. We define controls for the client. We work on various assignments and various nature of audits and all. All things is covered over there. But actually, like internal audit is a legal mandate for companies as per the Companies Act. So it is the scope bound activity and a routine activity. हम्म And Fonset, I feel that it's a next step for it. In the same, we also address the same risk of the eliminate the risk of the client by just like figuring out what has occurred in terms of fraud and all, be it a proactive assignment or a reactive nature of assignment. And but it is not a scope bound activity because we just get the leads of the assignment and the things that we need to work on. We define the same on our own post discussion with the management of the client. ओके ओके या सो बेसिकली ये डिफरेंस होता है एक स्कोप का दोनों फील्ड्स में राइट Right. And one thing more, like employment is a traditional field, I will say. So it is basically revolves around the process understanding and all the things. And forensic requires a lot of tools and techniques also, like a lot of IT tools and various IT processes are required to get into a forensic audit. So that's also a major difference from internal and forensic. सो काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है फॉरेंसिक बिकॉज नई भी है एंड या राइट है ना Yeah, it is something new, and on every assignment, every day, we learn something new, and we just apply the same into our work field.
Yeah, right. Okay. So यशस्वी, as you switch your profile, so अगर कोई भी बंदा अब इसी स्टेज पे अपनी जब प्रोफाइल स्विच करने के बारे में सोचता है, तो उसको क्या बातें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? First thing is just understand the profile first, like what is the job description, and if you can relate to it, what are the requirements of that particular role. And if you feel that you can give your 100% to that field and you can justify that role, then obviously go for it. Take the chance. Sometimes the decision might not turn good, then obviously you can take a step back. But just understand the profile and take that evaluation decision at the later part, like 6 months or so. ओके यशस्वी। सो यशस्वी, इंटरनल प्लस फॉरेंसिक्स दोनों में आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो कितना देखते हैं? I feel like I already mentioned, growth and the future perspectives more individual driven. Every work field can offer you great opportunities and all. Like these are not traditional field like we do in taxation and the statutory audit part. It is हम्म, something it was the risk of the client. It's risk advisory. So हम्म, यहाँ पे growth opportunities and the future perspective is really good because it's a value addition to the client and people the industry looks on for such people. And like the economy is at boom with the like this COVID has hit the whole world and various work from home scenario and various use of IT tools and this data dependency has increased. So obviously the need of a risk professional will also increase because people will get the opportunity to just conceal the facts and just take the benefit around it. Then obviously the need for a राइट। risk professional will come into play. ओके। सो बेसिकली ना बहुत सारे लोग क्लियर नहीं होते हैं कि फॉरेंसिक्स में एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है। तो एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर मैं फॉरेंसिक की बात करूँ, तो आप बता सकते हैं, जैसे अगर सपोज किसी को नहीं पता है पूरा फॉरेंसिक, तो क्या हुआ करता है फॉरेंसिक में? Forensic may we just work on the investigations related to the frauds and all the manipulations that might have occurred at the हम्म, client or at any company or something. And the nature of assignments can be proactive and reactive also. Proactive, like before, it's just a due diligence part and checking all the compliances part and so. And reactive can be when some flaw has occurred and we just review the same from the management side. And if I just say in a layman language, it's an audit only, but with a more investigative mindset on which we just got the leads, but we scope is not defined, and we just need to figure out that where the flaw has actually occurred. ऑल राइट। ओके यशस्वी, सो आपने सो फार अभी तक बहुत कुछ सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड एट लास्ट आपकी क्या एडवाइस होगी हमारे व्यूअर्स को जो भी इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं उनके लिए? Like just understand the job profile first. Like if you feel that you can give your 100%, like don't feel like it requires a lot of skills and it requires a lot of experience and all. Just understand the profile. If you feel that I can do really good into it and I can relate to the same, then go for it. Take the chance. And might be you really give your 100%. And for the CA freshers, I will particularly say, just don't feel like don't look much on the packages part or something big brands and all. Just see the work profile first and give your 100%. Invest your time. Like this is a stage where we need to build the career. So just invest the time into the work, and it will turn really good in future. ओके यशस्वी। सो यशस्वी, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, लाइक आप जो है बिग फोर में भी काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि हम उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करें, तो आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे कर पाते हैं आप? वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग कि मतलब वर्क एंड द पर्सनल लाइफ, तो आई फील कि मुझे ऑनेस्टली बीइंग अ वर्कहॉलिक पर्सन काम करते हुए ज्यादा अच्छा लगता है कि इफ द थिंग्स आर लाइंड अप आई कैन गिव माई 100% ऑन इट। एंड लाइक आई ऑलरेडी सेड कि कैरियर के स्टार्टिंग स्टेज में वन शुड इन्वेस्ट द टाइम। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्टार्टिंग में सोचो कि लाइक द ट्रेडिशनल फील्ड और ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर कि 9 to 5 जॉब इज समथिंग वन शुड लुक ऑन फॉर। So, like in the initial stages, it requires time, and a person should invest the time in the office and understand the things like what is required and how the things are actually working on. So I feel कि starting with no work-life balance नहीं है, but more specifically, Big Four also
respect the same, and if you require anything or there is some personal emergency or something, then people are really good. You get all the Okay. support and all the things. And the work culture at Big Four and all the companies is good, but Yeah. it only requires when you are working on, you should give your 100% and just understand the things well and enjoy the work. That is something which is required. Yeah, okay, right. So यशस्वी, okay, बहुत अच्छा जो है सेशन रहा हमारा आपके साथ, and yeah, even I learned a lot about both the profiles as well as like जो basically last में आपने बताया कि किस तरीके से जो है हम लोग उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं. So yeah, यशस्वी, all right. My pleasure, Gunjan, and thank you so much for inviting me to this discussion. Pleasure to Okay, connect. okay, यशस्वी, all right, bye. Bye. Thank you. एंड गाइस, वन मोर थिंग, लाइक अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है यशस्वी से पूछ सकते हैं. सो या, ही विल रिवर्ट बैक इन दैट कमेंट सेक्शन ओनली.